Hello, good morning, students. So we are starting with the next topic, respiration. Last day we covered with nutrition. Nutrition was how we are intaking the food. Okay. Now food has been reached to intestine and through the villis, it has been sent to all the cells of your body. Okay. अभी हर cells में आपका क्या गया food गया हुआ है. Okay. Now the next process is you have to get you wanted that food for some energy. Okay. Now how you are deriving that energy? You're deriving the energy through respiration. When oxygen goes into that cell, oxygen and food, when it reacts together, it forms into energy. Okay, so respiration is very important process through which energy is being generated. So we are inhaling oxygen and we are exhaling what? Yes, carbon dioxide. Okay, so we'll look in the process first. Now, respiration. Respiration is a process by which the food taken through nutrition get oxidized to release energy for performing various activities. Okay, so food say oxidize करके release energy करता है. That is what respiration means. Okay. Now, yesterday, last day itself, you have learned what is glucose. Okay, you have learned what is glucose, and glucose. You know what is a formula. Formula of glucose is what? C6H12 O6, right? So you learn the formula of glucose as C6H12O6. Okay. Now basically you have to first understand एक cell जो होता है, suppose this is a cell. Okay. Cell का हर जो part होता है, okay, that is known as the cytoplasm. बीच में क्या होता है? Nucleus. Okay. बीच में न्यूक्लियस होता है और बाकी सब जगह क्या होता है? साइटोप्लाज्म. और साइटोप्लाज्म के अंदर ही एक what there is a bean like structure. Okay, there is a बीन लाइक स्ट्रक्चर, उसको अपने बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया. और एनर्जी जो भी बिल्ड होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया. लास्ट ईयर आल्सो यू लर्न दैट व्हाट इज इन माइटोकॉन्ड्रिया द एनर्जी इज प्रोसेस्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. ओके, सो साइटोप्लाज्म बाहर है, बीच में क्या है? न्यूक्लियस है. ओके, नाउ लुक इनटू दिस फार्मूला ओनली फर्स्ट. ओके, फर्स्ट ग्लूकोज है. ग्लूकोज कहां पर होता है? उसका रिएक्शन कहां होता है? इट इज हैपनिंग इन साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म से जो यहाँ पर जो फॉर्म होता है वो क्या होता है? पाइरुवेट. Okay, pyruvate. So glucose का formula है C6H12O6. Remember that thing, C6H12O6. और pyruvate का formula होता है, sorry, C3H4O3. Okay, pyruvate का formula है C3H4O3. Now look here. Now here first it was 6 carbon. Okay, और यहाँ पर भी कितना कार्बन है? 3 carbons है, right? 6 carbon, sorry, 6 carbon and here it is 3 carbon. Okay, ये 6 carbon से 3 carbon में जब हो जाता है, okay, 6 carbon से 3 carbon होता है, 3 carbon को pyruvate बोलते हैं. और ये जो process है, this process is known as what? Glycolysis. Okay, this process is known as what? Glycolysis. Okay, so 6 carbon से 3 carbon होता है, वो process को बोलते हैं glycolysis. और 3 कार्बन को अकेले में क्या बोलते हैं? पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड. ओके, सो द फर्स्ट ब्रेकडाउन जो फूड आता है तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म में ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? ब्रेकडाउन हो जाता है और पाइरुवेट में फॉर्म हो जाता है. पाइरुवेट एंड सम एनर्जीज है. ओके, नाउ the breakdown of glucose, that is 6 carbon molecule into 3 carbon molecule, is called pyruvate. Okay, pyruvate, or it is pyruvic acid, anyone you can call it. Okay, pyruvic acid or pyruvate. Okay, this process of conversion of glucose to pyruvate is called glycolysis. Okay, this word is important. What is glycolysis? Is most often it is asked. Okay, glycolysis is 6 carbon to 3 carbon. 3 carbon का नाम क्या होता है? Pyruvate. Take place inside the cytoplasm of the cell. Okay, where it is happening? It is happening inside the cytoplasm. Cytoplasm is not in the nucleus, it is a cytoplasm outside. Okay, after the conversion of pyruvate into another substance depends on the presence or absence of oxygen. Okay, so now pyruvate तक जो होता है वो normal होता है. Okay, glucose to pyruvate हर cytoplasm में होता है. Okay, अभी यहाँ पर ऑक्सीजन ले रहे या ऑक्सीजन नहीं ले रहे, okay, उसके हिसाब से आपका प्रोडक्ट होगा. If oxygen is there, you will be having different product, and if your oxygen is not there, you will be having different product. Okay, so there are mainly two types of respiration. One is aerobic respiration and the other one is anaerobic respiration.
फर्स्ट वन इज एरोबिक एंड सेकंड वन इज व्हाट एनारोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन यानी वहां पर उसका किसका प्रेजेंस होएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेजेंस होएगा. ओके, और एनारोबिक में ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं होएगा. Is that clear this thing? So first we are going into aerobic respiration, the process in which large amount of energy is released. Okay, जब यहाँ पर जब ऑक्सीजन ले रहे, ओके ऑक्सीजन ले रहे तो यहाँ पर एनर्जी जो होता है 38 एटीपी होता है, बहुत ज्यादा होता है. ओके, 38 एटीपी. एटीपी इज व्हाट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. ओके, तीन फॉस्फेट की जगह बोलते हैं ट्राइफॉस्फेट, triphosphate. Okay, now you know that in this thing handwriting will not be coming that good, so understand it. Triphosphate, okay, is released. Okay, the process in which large amount of energy is released in the presence of oxygen from the breakdown of food substance. Okay, so this is the process. तो यहाँ पर energy क्या होगा, aerobic respiration में याद रखना, there is a presence of oxygen and the amount of energy will be what, high. Okay, now glucose to pyruvate plus energy, oxygen कहाँ पर होता है ये, mitochondria. Okay, it is happening inside the mitochondria. It is giving what, CO2, H2O and ATP. 6 CO2, H2O and ATP. Okay, CO2 क्या होता है, CO2 we are exhaling what, carbon dioxide. We are inhaling oxygen and we are exhaling what, carbon dioxide. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है, आपके हर सेल में से जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है वही आप एक्सेल करते हैं. ओके, सो द प्रोसेस इज हैपनिंग वेरी फास्ट. Okay, so CO2 plus H2, water is always there, and ATP is the energy you are acquiring. This process starts in the cytoplasm, as we discussed. पहले cytoplasm में होता है, फिर कहाँ पर जाता है, mitochondria, and continues in the mitochondria of the cell. Each glucose molecules release 38 ATP molecules. 38 ATP molecules, 38 adenosine triphosphate molecules. Water and carbon dioxide are the produced as the waste products. So these are the waste products. The energy released during this process is used for all other life processes. So this energy is used for all other life processes. Is that clear, this thing? So I want you to write this, all this thing. Okay. Glucose. Okay, now tell me. Glucose is what? The formula is what? C6H12O6. Pyruvate is what? C3H4 C3H4O3. Okay, याद रखो यहाँ पर C6H12O6, यहाँ पर 6 है, 6 है, यहाँ पर क्या है, 12 है. यहाँ पर C3 sorry C3H4O3. ओके, यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर अभी पाइरुवेट में 3 कार्बन होगा, वो याद रहेगा, तो 3 और 3 लिख देना, और 3 + 1 कितना होएगा, 4 यहाँ पर बीच में होगा. यहाँ पर देखो फॉर्मूला सेम है, CHO, यहाँ पर भी CHO है, यहाँ पर 6 12 6 और यहाँ पर 3 4 3. Okay, you have to remember that thing. Okay, pyruvate is not given in your textbook, the formula is not given to you. Glucose it is given, but then also you learn the pyruvate's formula also, C3H4 and. So this is the first reaction, यहाँ पर oxygen का presence हो रहा है. Okay, now the next one is what, there is no presence of oxygen, that is anaerobic respiration. Now the first, look here, the respiratory process in which small amount of energy is released. Okay, यहाँ पर कितना amount है, small amount of energy. पहले में बहुत ज्यादा था और इसमें अभी क्या है, कम है. In the absence of oxygen, okay, absence of oxygen, air for breakdown of substance, for breakdown of substance. Okay, it take place in yeast, bacteria. Okay, where all it happens. Okay, it happens in yeast, bacteria and human muscles. Okay, our muscles also anaerobic respiration is happening. Okay, there is a condition, we'll learn in that. It is termed as fermentation in microorganism, and is of following types on the basis of their product produced. Okay, fermentation यानी द सिंपल वे में ग्रेप्स जो होता है, ओके, उसको आप ग्रेप से वाइन बनाने के लिए क्या करते हैं, ग्रेप्स जूस लेते हैं, ओके, यूज ओके, एंड देन यू पुट इट इन अ जार, ओके, अ टाइट जार, ओके, वेयर देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वहां पर जा रहा नहीं है, और उसको क्या कर देते हैं, सालों तक रख देते हैं, और जितना साल होता है वहां पर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है. Okay, anaerobic respiration से finally what yeast is been, through the yeast what the wine has been produced. This is how the wine has been made. So there also anaerobic respiration is happening.
So now the types of anaerobic respiration. The first type is what? Alcohol fermentation. That's what I discussed just now. The second type is lactic acid fermentation. Okay, now alcoholic fermentation, the incomplete breakdown of sugar into ethanol. Okay, याद रखना जब भी OL हो, okay, लास्ट में OL हो, उसका मतलब याद रखना it is alcohol को. ओके, दिस अल्कोहल ग्रुप, ओएल यानी अल्कोहल. एथेनॉल होता है, मेथेनॉल होता है, ओके, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ऐसा सीरीज में बहुत सारे. ओके, एथेनॉल इज द नॉर्मल अल्कोहल. ओके, now in the incomplete breakdown of sugar यानी glucose वो सब into ethanol and carbon dioxide to release energy. Okay, that forms an alcoholic fermentation. This process occurs mainly in yeast, which is used to produce beer, wine, toddy, cheese, etc. by brewing यानी making of beer and all that, that is known as brewing. Okay, so alcoholic fermentation भी क्या होता है? Anaerobic respiration होता है, जहां पर this absence of oxygen is there. Okay, the second one is lactic acid fermentation. Okay, lactic acid is something that is happening inside your body also, that is in the muscle. The process of incomplete breakdown of sugar into lactic acid and energy in some bacteria. Example, okay, bacteria में से मतलब हो रहा है, तो example like yogurt making. Okay, yogurt making you know very well. Okay, some bacteria causes milk to turn sour. Okay, yogurt यानी क्या होता है? हिंदी में बोले तो समझ में आएगा. It's दही. दही जो होता है उसको योगर्ट बोलते हैं. ओके, सो योगर्ट मेकिंग में भी क्या होता है? वहां पर भी क्या होता है? बैक्टीरिया का एक्शन होता है. इट इज आल्सो हैपनिंग इन एब्सेंस ऑफ व्हाट? ऑक्सीजन. इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है तो क्या होएगा? बैक्टीरिया व्हिच कॉजेस व्हाट? मिल्क इनटू योगर्ट. ओके, so that is what the first lactic fermentation. These bacteria feeds on sugar and break it into lactic acid. Okay, in our muscles during vigorous physical exercise. Okay, now when we are doing high exercise, glucose is metabolized to form lactic acid. The accumulation of lactic acid causes fatigue and pain and muscle cramps after prolonged exercise can be summarized as. Okay, तो जब भी आप ज्यादा एक्सरसाइज करते हो, okay, वो पर्टिकुलर एरिया में आपको बहुत ज्यादा पेन होता है. ओके, तो वो पेन का रीजन क्या होता है? वहां पर ऑक्सीजन ठीक तरह से पहुंचना नहीं है, तो वहां पर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, वो मसल के उस साइड में. तो इसके लिए आपको ये फैटिक एंड मसल क्रैम्प्स सब फील होता है. ओके, नाउ यू हैव सीन दैट रनर्स जो होते हैं, मतलब जो भागते हैं 100 मीटर 200 मीटर्स रन. ओके, वो लोग भागने के बाद तुरंत जाने के बाद थोड़ी देर के बाद, मतलब जैसे कि फिनिश लाइन खत्म होने के बाद, दे यूज्ड टू बेंड डाउन. They used to bend down and inhale as much as oxygen they can. Okay, so as to so as that they can take in the oxygen and it goes all to the places. ये bend होते हैं, उनके brain में भी ज्यादा ऑक्सीजन जाने के लिए वो bend होते हैं ताकि easily जा सके. Okay, so if it is not going, what will happen? The headache and other means traumas can happen. Okay, fatigues and cramps can be happening. So that's why they are also doing. So whenever, so breathing is very important in exercise. Okay, so they are always, whenever they exercise, they tell that they breathe in and then do the thing. Okay, the main reason is this one. Okay, lactic acid formation na hone ke. Okay, anaerobic respiration na hone ke. So this is the thing. So we'll summarize and look here. Okay, now whenever respiration, aerobic and anaerobic respiration, the question is asked, you are needed to make this one. This one is the first most important thing. Okay, this one itself gets 1.5 mark, this diagram. Okay, if it is a 4-mark question, 1.5 mark will be for this diagram only. So the first one is what we as discussed. पहले क्या होगा? ग्लूकोज होगा. ग्लूकोज से क्या होगा? पाइरुवेट. ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? C6H12O6 और पाइरुवेट का है फॉर्मूला C3H4O3. ओके, और यहाँ पर तीन टाइप है. तीन टाइप यानी यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेजेंस है, ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं है. पहले आपने क्या पढ़ा था? ऑक्सीजन का प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. और ये कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. सो क्या फॉर्म होता है? कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, वाटर होता है और एनर्जी होता है. एनर्जी कितना होता है? 38 ATP. Good. Now the second one is anaerobic respiration. यहाँ पर क्या होगा? Lack of oxygen और absence of oxygen. So first you learn is absence of oxygen. Absence of oxygen क्या होता है? Yeast में होता है. तो क्या होता है? Brewing जो होता था, beer वो सब, ethanol. So ethanol has been forming. Okay, ethanol, carbon dioxide and energy. Energy यहाँ पर भी कितना होता है? खाली 2 ATP होता है. Okay, it is very less. That is 2 ATP. So ethanol is the alcohol. Now the next one is what? Lactic acid का था.
So lack of oxygen in our muscle cells क्या होता है, lactic acid plus energy, और lactic acid and that is also 3 carbon molecule. So ये हुआ अगला process. So ये एक aerobic है और बाकी ये दोनों क्या होएगा, anaerobic respiration. So this diagram is very much important. Remember that thing. Okay, breakdown of glucose by various pathways. Okay, now difference between aerobic and aerobic respiration and anaerobic respiration, just going on same way itself. Occurs in the presence of oxygen releasing large amount of energy. Okay, so occurs in the absence of oxygen releasing relatively small amount of energy. यहाँ पर 38 ATP होता है, यहाँ पर कितना होता है 2 ATP as it is written. Begins in the cytoplasm and continues in the mitochondria. तो कहाँ पर cytoplasm में start होता है और mitochondria में exit होता है. Most of the plants and animals, correct. So occurs in cytoplasm only. तो क्या यहाँ पर ये कहाँ पर होता है, खाली cytoplasm में होता है, mitochondria में नहीं होता है. और इसका example क्या है, anaerobic का bacteria, yeast, etc. Okay, now ATP means क्या होता है, adenosine triphosphate. ये energy currency of the cell. Okay, which is the energy currency of the cell, that is ATP. Remember that thing. Don't write mitochondria. Powerhouse of the cell is what, mitochondria. Energy currency of the cell is what, it is ATP. Now ADP plus P. ADP यानी क्या होगा, adenosine diphosphate. Okay, di यानी 2 होता है और tri यानी 3 होता है. तो यहाँ पर पहले डाइफॉस्फेट था, डाइफॉस्फेट के साथ एक फॉस्फेट ज्वाइन होएगा तो क्या फॉर्म होएगा, ट्राइफॉस्फेट. ओके, सो दैट इज हाउ इट इज फॉर्मिंग. नाउ इट इज एंडोथर्मिक. एंडोथर्मिक क्या होएगा, अंदर हीट होएगा. ओके, सिस्टम के अंदर हीट होएगा, इट विल बी नॉट आउटसाइड. ओके, हीट बाहर नहीं अंदर होएगा. सो कोई भी एक सिस्टम हो तो हीट अंदर हो तो ओके, अंदर हो तो क्या होएगा, उसको अपने क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक. अगर सिस्टम हो और हीट बाहर हो जा रहा है, ओके, इट इज लिबरेटिंग आउटसाइड, देन इट इज नोन एज व्हाट, exothermic. Now in the cell, they use this ATP to drive the reaction. When the terminal phosphate linkage in ATP is broken using water, the energy equivalent to 30.5 kilojoule mole is released. Okay, so this is just an extra point. ATP can be used in the cell for the contraction of muscle, protein synthesis, conduction of nervous impulses and many other activities. यानी आपके body का हर activity इसके अंदर आ गया almost. Okay, contraction of muscles, protein synthesis, okay, conduction of nervous impulse system. All this process is happening inside your body. Contraction of muscles, you know what muscles, whether relax and contract. Okay, peristaltic movement in your esophagus, all that are muscles itself. Protein synthesis यानी क्या होगा, digestion and all the other processes. Conduction of nervous impulses, मतलब आपके brain के through आप एक एक direction, means if I'm moving this hand this side, okay, or this side, okay, the brain is giving that action. So वो impulses जो होता है उसका perform करने के लिए जो energy होता है, conduction of nervous impulses, तो वो सब energy कौन देता है, ATP देता है. So that is about aerobic respiration and anaerobic respiration. Okay, now if it is asked in 4 marks, aerobic respiration, anaerobic respiration, it is also important. It has also been asked. Okay, most of the questions now in 6th chapter, what happened, एक साल में एक question पूछते हैं, so that you can't say which one is important, which one is not important. So if it is asked aerobic respiration and anaerobic respiration, you are needed to write from the respiration and this diagram most importantly. Okay, and if it is asking the difference, then you are needed to write this difference also. Okay, and this is extra thing, ATP से जो है वो extra है. It may be asked for 2 marks or anything only. Then now different animals with their respiratory surface. Okay, now first we'll go into ours. Okay, our respiratory surface is lungs. Okay, we are having nose, but the lungs is doing all the inhalation and exhalation, whatever it is happening, it's happening inside the lungs. Okay, now the other one is amoeba and planaria. It is having cell membrane. Earthworm, amoeba का आपको याद है ना, cell membrane से ही अंदर और बाहर जाता था. Earthworm and leech, it is moist skin. Fish, prawns, mussel and tadpole, its gills. Frog होता है तो उसका moist skin and lungs. Grasshopper, mosquito and housefly resign spiracles and air tubes. Okay, bird, lizard, terrestrial animals को क्या होता है, lungs होता है. Okay, so that is the thing. This is just, you have to learn this surfaces. Next, human respiratory system. Human respiratory system is important. Okay, यहाँ से आपको याद को पता होगा, you are taking in oxygen from the nose or you can take from the mouth.
ओके, टू पाथ आप ले सकते हैं। हमेशा कौन सा लेना चाहिए आपको? नोज से लेना चाहिए, बिकॉज देयर इज प्रेजेंस ऑफ म्यूकस व्हाट व्हिच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डस्ट पार्टिकल्स एंड अदर पार्टिकल्स एट फर्स्ट। ओके, माउथ के अंदर म्यूकस नहीं होता है। ओके, म्यूकस इज अ लाइनिंग इन योर नोज इज नोन एज द म्यूकस। और वहां पर आपको पता है कि इन योर नोज देयर आर हेयर्स आल्सो, स्मॉल हेयर्स आल्सो। दैट हेयर्स व्हाट इट डज, इट ऑब्स्ट्रक्ट्स द फॉरेन मटेरियल्स, ओके, व्हिच इज नॉट गुड फॉर योर which is not good for your body. It obstructs it. So mucus is, so that's why it is very important to breathe in from the nose itself. Okay, so yahan se, so first we are taking in ऑक्सीजन फ्रॉम द नेजल कैविटी। ओके, नेजल कैविटी से यहाँ पर आपका ये माउथ से भी ये ऑक्सीजन आ सकता है। ओके, सो माउथ कैविटी इज आल्सो नोन एज ब्यूकल कैविटी। और यहाँ से ये कहाँ जाएगा? फेरिंग्स जाएगा। ओके, फेरिंग्स में जाएगा। फेरिंग्स इज द फर्स्ट, योर अबाउट दिस above your this neck is known as this pharynx. Okay, now after pharynx it goes to the larynx. Okay, ये larynx के इधर, okay, in here it is your vocal cord also. Okay, your vocal cord is also present in the larynx. Okay, vocal cord से ही आपका पूरा आवाज आता है। Okay, so it is going, because air is going in, that's why the sound is also coming. Okay, अभी ये पहले क्या था? nasal passage, mouth cavity, and from there it goes into pharynx. pharynx से कहाँ जाएगा? larynx। और larynx से ये कहाँ जाएगा? larynx से ये कहाँ जाएगा? rings of cartilage. Now you can see the rings here. Okay, ये rings जो होता है cartilage muscle. Now cartilage muscle, where you're having the cartilage muscle in your ears and in your nose. Okay, जो flexible होता है, okay, easily flexible होता है, उसको अपने बोलते हैं cartilage. Okay, cartilage muscle आता है easily flexible thing. Okay, अभी ये फ्लेक्सिबल क्यों इतना इंपॉर्टेंट? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज फ्लेक्सिबल यहाँ पर क्यों रखा हुआ है? ओके, नाउ यू नो दैट कभी कभी देखो ये घर पे, if you are staying in a row house or anything like that, okay, घर पे मोटर हो तो, okay, अभी अगर पानी नहीं हो तो क्या होता है? ये पाइप के अंदर एयर चला जाता है। ओके, पाइप के अंदर एक बार एयर चला जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है? वहां पर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ओके, हाई प्रेशर क्रिएट होने के कारण क्या होता है? फिर उसके बाद आप पानी टैंक के अंदर हो तो अभी वो पाइप के अंदर से पानी जाएगा नहीं। ओके, सो उससे पहले क्या करते हैं? ये पाइप खोलते, ओके, और उसके अंदर पानी डाल देते, दैट इज व्हाट द प्रेशर इज बीन रिलीज्ड। ओके, सो आप सोचो कभी कभी आप है ना, इन योर प्ले इटसेल्फ व्हाट विल हैपन? यू आर नॉट ब्रीथिंग इन, आप स्टॉप कर दो, ब्रीथ को स्टॉप कर देते हो। ओके, अगर ब्रीथ को आप स्टॉप कर देते हो तो आपका ये क्या हो जाता है? यहाँ पर क्या हो जाता है? देयर इज नो एयर इन हियर। ओके, जब एयर नहीं हो, ओके, यहाँ पर भी क्या होएगा? हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा ना, फिर वहां यहाँ से फिर कभी भी एयर नहीं जा सकता, ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा। सो व्हेन इट इज अ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या होएगा? यहाँ पर स्मूथ मसल्स है, तो यहाँ पर एयर हो या नहीं हो, इट विल बी फंक्शनिंग द सेम वे। That is the importance of rings of cartilage. Whether the air is there or air is not there, it will not be creating any pressure. Okay, so first it was nasal cavity, nasal passage, mouth cavity से pharynx से बाद larynx से कहाँ जाएगा? rings of cartilage। और rings of cartilage से you can see the branch। okay, ये आपका ribs है। okay, now you are having two lungs। okay, one lungs we are going into one lungs। okay, so the first, okay, ये जो दो branch होता है, okay, this two branch is known as the bronchi। okay, यहाँ पर फर्स्ट क्या होता है? ये ब्रांच को क्या बोलते हैं अपने? ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकाई का सब ब्रांच जो होता है, ओके, सब ब्रांच जो होता है उसको अपने बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। ओके, ब्रोंकाई इज द मेन ब्रांच से जो सब ब्रांच होता है उसको अपने क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल्स। और ब्रोंकियोल्स से सबसे लास्ट में, ओके, ब्रोंकियोल से सबसे लास्ट में जो होता है, यहाँ पर एंडिंग में जो होता है, उसको अपने बोलते हैं एल्वियोलर सैक। ओके, एल्वियोलर सैक में क्या होता है? एल्वियोलाइज होता है। ओके, ये एल्वियोलाई, और यहाँ से क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आप लेते क्या हो? ऑक्सीजन, आप वापस देते क्या हो? कार्बन डाइऑक्साइड। तो सेल से कार्बन डाइऑक्साइड आता है और ऑक्सीजन यहाँ से वापस आता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो आया वापस यही पाथ से क्या होगा? आपके ऊपर जाके नोज से बाहर आता है। यू आर इनहेलिंग व्हाट? ऑक्सीजन। यहाँ से इनहेल करके पहले यहाँ पर फेरिंग्स जाएगा, फेरिंग्स से it is going into larynx से ट्रकिया के अंदर आपका रिंग्स ऑफ कार्टिलेज
रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल से एल्वियोलाई, एल्वियोलाई में क्या होएगा, एक्सचेंज होएगा, ऑक्सीजन आप बाहर दोगे, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस क्या होएगा, एल्वियोलाई में पहले जाएगा, फिर ब्रोंकियोल्स में जाएगा, ब्रोंकियोल से कहां जाएगा, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ट्रकिया के अंदर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, फिर लैरिंग्स, फायरिंग्स या फिर माउथ कैविटी या नेसल कैविटी से इट विल बी गोइंग आउटसाइड. सो दैट इज द प्रोसेस. ओके, सो जब इनहेल करते हो, ओके, नाउ व्हेन यू आर इनहेलिंग, ये डायफ्राम कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा. ओके, you know that when you are inhaling, what will happen, your chest will be increasing and the diaphragm will be going down. Okay, तो diaphragm ये क्या हो जाएगा, flatten हो जाएगा, ये flat हो जाएगा, ऐसे सीधा आ जाएगा. ओके, और जब एक्सेल करते हो तो यही चीज क्या चला जाएगा, वापस ऊपर चला जाएगा. ओके, सो एंड ये डायफ्राम जो होता है स्पेस दे रहा है. ओके, स्पेस दे रहा है ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को आने जाने के लिए, क्या दे रहा है, स्पेस दे रहा है. सो डायफ्राम इट इज गोइंग डाउन, फ्लैटन्स हो जाता है जब ऑक्सीजन आता है, एंड इट गोज अपसाइड व्हेन इट इज व्हाट, एक्सेल. So that is the process in here. Okay, so now we'll look into the points. Okay, respiratory system in human beings serves to provide fresh oxygen to all body cells. Okay, to all body cells, not only to the lungs. Okay, पहले आप lungs में जाता है, फिर lungs के बाद अब अगला आप सीखोगे. Okay, and remove harmful carbon dioxide from the body. Now first one is nostrils. Nostrils is the nose. Air is taken into the body through nostrils. The air passing through the nostril is filtered by fine hairs and the line of the passage. The passage is also lined with mucus, which helps in this process. Okay, so foreign materials are basically we have been protected by the mucus and the fine hairs. Okay, so first intake is from the nostril. The second is what we are going to the pharynx. Nasal chamber open into pharynx. It passes the air into larynx. Okay, pharynx से कहाँ जाएगा, larynx. Larynx, it is located in the neck, helps to protect trachea. Okay, larynx क्या करता है, helps to protect trachea and also produce sound. तो आपका जो vocal cord है वो कहाँ पर होएगा, larynx के अंदर. याद रखो, vocal cord से आप loud voice बनाते हो, loud voice बनाते हो. So loud and larynx, these are both what interrelated. याद रखो. Now the next one is trachea. Trachea and आपका windpipe. Okay, the air passes from larynx and goes into trachea. Rings of cartilage keep trachea open, allowing the passage of air to the lungs and also prevent it from collapsing. देखो rings of cartilage क्या था, ये opening है trachea के लिए, यहाँ पर ये cartilage muscles है. Now it prevents from what, collapsing when there is no air in it. Okay, जब air नहीं हो तो collapsing से क्या होता है, बचाता है. अगर एयर नहीं हो तो नॉर्मल पाइप में क्या होता है, उसके अंदर वापस है, वापस उसके अंदर कोई भी क्या होएगा, ट्रांसफर कुछ भी नहीं होएगा. Okay, so rings of cartilage हो तो वहां पर air नहीं हो, then also it will be functional. Okay, so trachea, rings of cartilage is protecting that. Okay, this rings of cartilage, this point is important. Bronchi, trachea divides into smaller tubes on entering the thoracic cavity. Okay, thoracic cavity यानी ये lungs के अंदर से, ribs के अंदर से जो होता है, ये cavity को बोलते हैं thoracic cavity. Okay, which further extended into lungs. Okay, bronchi से lungs में जाता है. Two bronchi are subdivided into smaller tubes called bronchioles. Each bronchiole finally, okay, each bronchiole finally gives into each bronchi finally terminates in balloon-like structure called alveoli. Okay, so last में क्या होगा, पहले means bronchi होगा, bronchi से bronchioles और bronchioles से क्या होगा, alveoli होगा. Okay, now alveoli से वहां पर होगा exchange. Alveoli, the alveoli provide the surface where the exchange of gases can take place. Exchange of gases यानी कौन सा होगा, O2 and CO2. आप O2 देते हो तो क्या होगा, CO2 आप लेके जाते हो. Okay, so that is the process it is happening. Okay, now the walls of the alveoli contain an extensive network of blood cells. Okay, so blood cells का एक extensive area है ये alveoli में. Okay, you will understand that. और ये alveoli से ही क्या होता है, हार्ट में जाता है, हार्ट से ही क्या होता है, बाकी सब आपके बॉडी में जाता है. In short, okay, so you are inhaling in oxygen, oxygen inhale करते हो तो पहले वो कहाँ जाएगा, nostril. Okay, nostril या mouth cavity, वहां से कहाँ जाएगा, pharynx में, pharynx से कहाँ जाएगा, larynx में, larynx से trachea. trachea के अंदर होता है rings of cartilage. rings of cartilage के अंदर क्या होता है, two main branches, that is known as the bronchi. bronchi के बाद bronchi का सब ब्रांच होता है bronchioles. bronchioles का सब फिर लास्ट में क्या होता है, alveoli. alveoli sac के अंदर होता है alveoli. alveoli के अंदर ऑक्सीजन आप बाहर देते हो, ये ऑक्सीजन जो होता है हार्ट में जाता है और हार्ट से आपके पूरे बॉडी के सेल्स में जाता है.
और ये पूरे बॉडी के सेल्स के अंदर जब वो रिएक्शन होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, तो क्या फॉर्म होता है? कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, राइट? ये लुक हियर, ग्लूकोज प्लस पाइरूवेट, ये ऑक्सीजन जाता है तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बना है सेल के अंदर, जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है, वो वापस कहाँ जाएगा? हार्ट के अंदर जाएगा। हार्ट से कहाँ जाएगा? हार्ट से आपके लंग्स के अंदर, लंग्स से बाहर आता है। दैट इज द process is happening inside your body. इतना सब process आपके body में होता है. So whenever you now inhale, understand it, it is going through this way. Okay? अब 2-3 बार आप ही सोचोगे कहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ये सब branches का नाम क्या है, और यहाँ से पूरे body में, पूरे body से वापस कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है. Okay? So this is a huge process. Now, so the walls of the alveoli contain an extensive network of blood cells. Okay? Extensive network है उनके पास भी blood cells. So when we breathe in, we lift our ribs and flatten the diaphragm. Okay, lift our ribs यानी ribs जो होता है आगे आ जाता है. Chest cavity becomes larger as a result. Okay, chest cavity जो होता है बड़ा. Because of this, air is sucked into the lungs and fills an expanded alveoli. Okay, expanded alveoli होता है. तो वहाँ पर high pressure हो जाता है. तो normally high pressure से कहाँ जाएगा? Low pressure में. The blood brings carbon dioxide. मैंने बोला कि जो blood होता है यहाँ से ब्लड में से, ब्लड यहाँ पर होता है, ब्लड क्या लेके आता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ से क्या आता है? ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन है, और यहाँ पर क्या है? लो कॉन्सेंट्रेशन. हाई कॉन्सेंट्रेशन, लो कॉन्सेंट्रेशन जाता है. ओके, ऑक्सीजन यहाँ पर पहुंचता है और कार्बन डाइऑक्साइड वहां से यहाँ पर पहुंच जाता है. सो द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड and from the rest of the body and released into the alveoli, and the oxygen into the alveolar air is taken up by the blood in the alveolar blood vessels to be transported to all the cells in the body. So to all cells it is one. So in human beings, the respiratory pigment is hemoglobin, which is very high affinity for oxygen. Okay, now ये hemoglobin जो होता है, okay, now it helps in what, ये oxygen को लेके जाने के लिए बहुत बड़ा help करता है. hemoglobin जो RBC होता है, hemoglobin, that is having a high affinity towards oxygen, so it picks the oxygen and takes it all the places. Okay, so in human beings, respiratory pigment is hemoglobin, which is has a very high affinity for oxygen. We'll see in the next video about hemoglobin more. Okay, elephant के अंदर कैसे होता है, human being के अंदर कैसे होता है. This pigment is present in the blood cells, RBC. You know RBC, WBC, and platelets. That is the components of the blood. Carbon dioxide is more soluble in water than oxygen, and hence is mostly transported in the dissolved form in blood. Okay, so dissolved form में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? ब्लड के अंदर जाता है. Okay, और ऑक्सीजन किसके साथ जाता है? हेमोग्लोबिन के अंदर. Okay, now elephant के अंदर क्या होता है? बॉडी साइज क्या होता है? लार्ज होता है. So use respiratory pigment. Okay, we'll see into that. So this is the process. So understand one more time. Nostril, mouth cavity, pharynx, larynx, trachea, rings of cartilage, bronchi, bronchioles, and alveoli. Okay, so this is the process. Now just we'll look into one video. In this module, you will learn about respiration in human beings. How do human beings respire? In human beings, air is drawn into the body through the nostrils. Nostrils are lined with fine hairs and mucus that filter the air as it passes through. Next, the air travels through the throat and then moves through a pipe called trachea. Trachea contains cartilaginous rings that ensure smooth flow of air into the lungs. From here, the air passes through the bronchi before entering the lungs. The bronchi are like a network of tubes that keep branching into smaller tubes called bronchioles. At the end of each bronchiole, you will find balloon-like structures called alveoli. The alveoli provide a surface for the exchange of oxygen and carbon dioxide. The walls of the alveoli contain a massive network of blood vessels. When we breathe in, we lift our ribs and flatten our diaphragm. As a result,
the chest cavity becomes larger. Air gets sucked into the lungs and fills the expanded alveoli. The oxygen in the alveolar air is taken in by the red blood cells in the alveolar blood vessels. The oxygen in the red blood cells is then transported to all the cells in the body. The cells in turn release carbon dioxide, which diffuses into the blood and is then released into the alveoli. In large animals like elephant, it is difficult for oxygen to reach all parts of the body through diffusion. Hemoglobin, a respiratory pigment present in red blood cells, has high affinity for oxygen. This pigment binds with oxygen from the air in the lungs and forms oxyhemoglobin. Later, through oxyhemoglobin, oxygen is distributed to all the tissues in the body. The tissues in turn release carbon dioxide, which diffuses into the nearby blood capillaries. Carbon dioxide is more soluble in water than in oxygen. Therefore, carbon dioxide is generally transported through blood as bicarbonate, which is its dissolved form. In this module, you learned that air enters a human body through the nostril. It moves through the throat and then the trachea. From the trachea, it enters the bronchi and then goes into the lungs. The bronchi form a network of tubes known as bronchioles. Each bronchiole has alveoli at the end. Hemoglobin absorbs oxygen from the air in the lungs and carries it to tissues all over the body. Okay, hope you understood this thing. Okay, so now one more thing. So you're clear with you're inhaling oxygen and you're exhaling what? Carbon dioxide. So see, there is at the first there is an experiment. Okay, experiment number 6.4. Okay, 6.4 के अंदर देखो यहाँ पर lime water लिया है. Okay, lime, you remember in the first chapter lime water. Okay, lime and all. चूना जो होता है उसको lime बोलते हैं. Lime water यानी what lime with water is known as what? Lime water. So lime water के अंदर जब देखो पिचकारी से आप हवा यहाँ पर दे रहे हो और यहाँ पर जो योर व्हाट यू आर एक्सेलिंग आउट, आप अगर हवा दे रहे हो बलून के अंदर आप हवा दे रहे हो तो कौन सा हवा होएगा वो? Okay, it will be what? Carbon dioxide. Whenever you are filling, okay, you are filling a balloon, okay, it is containing which gas? Carbon dioxide gas. Simple. Okay, now पिचकारी के अंदर से क्या होएगा? Air जब you are taking in air from the outside itself. Okay, so air ही होएगा वहां पर, उसके अंदर कौन सा गैस होएगा ज्यादा? Oxygen gas ही होएगा. So when lime water is reacting with oxygen, there is no change in the color of it. Okay, nothing is happening. It remains the same color itself, the white itself. Now when it is reacting with carbon dioxide, what will happen? यहाँ पर देखो lime water का जो formula है CaOH twice. Okay, slaked lime का जो formula होता है वही होता है इसका lime water का भी formula. Okay, so lime water when it is reacting with carbon dioxide, it forms into what? You already know what? Calcium carbonate. Yes, calcium carbonate is main form CaCO3 plus H2O. तो ये जो होएगा उसका जो दिखने में वो क्या होएगा? मिल्की हो जाएगा. ओके, ये वाटर जो हाउ इट विल बी सीइंग दिस CO2 से वाटर कैसे दिखेगा? इट विल बी मिल्की. ओके, मिल्की हो जाएगा यानी मिल्क टाइप इट विल बी, मींस फेडेड टाइप हो जाएगा. ओके, इट इज बिकॉज ऑफ द रिएक्शन ऑफ व्हाट? स्लेकेट लाइम विद कार्बन डाइऑक्साइड. सो CaCO3 फॉर्म होएगा प्लस H2O. ओके, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड this thing. Okay, this thing in the first chapter. देखो फर्स्ट चैप्टर के अंदर देखो CaOH twice plus CO2 giving CaCO3 plus H2O. ओके, सो यहाँ पर CaCO3 जो होता है क्या होता है? सॉलिड में होता है और H2O क्या होता है? लिक्विड. तो ये प्रोसेस के कारण क्या होएगा? यहाँ पर ये क्या होएगा? कौन से फॉर्म में होएगा? मिल्की फॉर्म में इट विल बी.
So this is one experiment that you are needed to do. Okay, so just remember वो formulas याद रखो खाली CaOH twice plus CO2 giving CaCO3 plus H2O. So that is what happening. It is an experiment where it has been showing that we are exhaling what carbon dioxide and we are inhaling what oxygen. Then we learned about respiration, aerobic respiration and anaerobic respiration. This diagram, okay, all the points you are needed to write. Then human respiratory system. Okay, so this is the next 4-mark question. Okay, human respiratory system, this portion full, that is the 4-mark answer. Okay, yes. Okay, so this much you are needed to learn. Okay, and see, each day one portion is being covered, so learn on that day itself. Okay, don't keep it for the next day, it will not be finishing. Remember that thing. Okay, so thank you very much. Do your homeworks regularly. Most of them are doing, and some of you are not doing. Okay, if you're not doing the homeworks, okay, I'll not be sending you any notes or videos. Okay, after you complete the homeworks, then only you'll be getting all the materials. Okay, thank you very much.